what are your opinions or views about the coaching centers? Should an aspirant join a coaching center for this? Look, I'll tell you, I'll give you my personal example. When I went for the SSB, I didn't take any coaching. But since I was NCC cadet, and in NCC Directorate had organized a pre-SSB course for us. So during that course, same thing which we are tested in the SSB, we were put through that. Okay. तो उसके बाद इनिशियल शुरू में मेरे को लगा कि SSB कोचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, बट व्हेन आई वेंट थ्रू दैट, तो उसके बाद देन आई रियलाइज दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now, why it is important and what should be kept in mind while going for a coaching? That is very, very important. Coaching के लिए तो आप बोलोगे बहुत बच्चे जाते हैं, but कई बच्चे जो है because of coaching they get rejected. And why they get rejected is because उनको ये जो coaching में बताया जाता है वो ही चीजें verbatim वो वहां जाके उसको कर देते हैं. Now उसमें जैसे I'll tell you what are the advantages of coaching. Firstly, they make you aware of the complete SSB procedure. All those candidates जिनका किसी पेरेंट्स या किसी से जान पहचान नहीं आर्म फोर्सेज, he has got no idea what is SSB. तो SSB कोचिंग करने से सबसे बड़ा फायदा है, he goes through the complete distinct program, he knows what all tests will be there, how they will be conducted, what all has to be done. तो उसको when he goes for SSB, he is not strange to anything. Number one advantage तो सबसे बड़ी ये. नंबर दूसरा जो है, कोचिंग if they are going to a coaching center which is correct coaching center. There is a difference between correct and incorrect. Correct coaching center is one where they try to develop your officer-like qualities. अभी क्या होता है, कोचिंग सेंटर में जाते हैं बच्चे, 10-12 दिन की उनकी कोचिंग होती है. 10-12 दिन में आप जो है सिर्फ उनको साइकोलॉजी टेस्ट या टेस्ट बता दोगे, लेकिन 10-12 दिन में आप उनके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को नहीं बता सकते, ना वो डेवलप कर सकते, ना उनको पता लगता प्रोजेक्ट कैसे करना. बट अगर इफ यू आर गोइंग फॉर ए राइट कोचिंग सेंटर, then that coaching center will be able to tell you what are the qualities required. Then they will tell you how to develop them, and then they will also tell you how to project those qualities in the different tests. That is the second advantage of getting for the coaching center. Third is that when you are in a group, suppose for example I don't go for coaching center, if I have to practice my lecturate, with whom do I practice my lecturate? I have to stand in front of mirror, that is the only way, or I tell my family members to listen to me. They may not listen, they may listen. Second thing is that if you have to do a group discussion, then you require at least 10-12 people to do group discussion. Then if you have to do PPDT, you require people. If you have to do military planning exercise, you require people. So once you do join a coaching center, there you are able to interact with a lot of people. And because you're interacting with a lot of people, you build up confidence. वो जो shyness होती है, वो जो hesitation होती है बोलने की, वो निकल जाती है. I think the biggest advantage in joining the coaching center is that you become more confident. You forget about the hesitation part, and you are able to interact with the group. Because if you understand, it is very easy to speak on one-on-one like you and me are speaking. But if there are 20 people sitting here, and if I have to speak, then I will think 10 times whether I will be able to speak or not. Yes. So कोचिंग सेंटर में सबसे बड़ा फायदा रहता है कि आपको ग्रुप में बोलने की आदत पड़ जाती है. तो देन यू व्हेन यू गो फॉर एसएसबी, यू आर नॉट हेजिटेंट, योर कॉन्फिडेंस लेवल इज ऑलरेडी हाई. देन अदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट गाइडेंस जो वहां पे मिलती है. अभी क्या है, कोचिंग सेंटर्स में गाइडेंस अगर आपको ठीक मिल रही, इट विल बी ऑफ ग्रेट एडवांटेज. सो दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ गोइंग, बट caveat is that you must join the correct coaching center, not that coaching center which will tell you what to write. You must join that coaching center which tells you how to write. Okay. So there's a thin difference between the two. There is but it is important. I'll tell you, for example, now most of the coaching center, what they do is when they tell the students about the psychology test, they show the sentences and then they tell them the sentence also. Now what happens is that that candidate, when he goes for the essay, he sees that word, he writes the same sentence. So once you are writing the sentence from the book or from what you have learned in your coaching center, then what you are projecting is not your personality, you are projecting the personality of that coaching center or of the author of that book. So there that dichotomy comes when they say that the personality in front of GTO, psychologist and interviewing officer should be same.
वो नहीं हो पाती है। सो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी जो इंडिविजुअलिटी है हमें वो भी मेंटेन करनी है। इंडिविजुअलिटी आपकी खत्म हो जाती है जब आप ऐसे कोचिंग सेंटर में जाते हैं जहां पे आपको रेडीमेड आंसर बताए जाते हैं। फॉर अनदर एग्जांपल, जो है स्टोरी राइटिंग है। स्टोरी राइटिंग में सपोज एक स्टोरी आपको एक स्लाइड दिखा दिया, एक पिक्चर दिखाई, जिसमें एक आदमी जो है, जो एक बोट है, बोट कैप्साइज्ड हो गई और लोग जो है डूब रहे हैं, और एक जो है, और उसमें से कह रहे हैं कि जी अब आप इसके ऊपर स्टोरी लिखो। तो जो स्टोरी वहां पे जो औरों के साथ डिस्कस करी है, या जो बुक में लिखी है, या वहां पे इंस्ट्रक्टर ने बताई है, अगर आप वो स्टोरी लिखोगे वहां जाके, तो वो स्टोरी तो उसकी आपकी तो नहीं है। तो उसकी वजह से ज्यादातर कैंडिडेट्स जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि कोई भी कोचिंग जो है एसएसबी के लिए, आप 10, 15, 12 दिन में, जो कि नॉर्मली ड्यूरेशन है आजकल किसी भी कोचिंग सेंटर में जाए, आप एसएसबी की तैयारी नहीं कर सकते। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बट एडवांटेजेस आर मोर, एंड जो डिसएडवांटेजेस है वो, अगर एटीट्यूड कैंडिडेट का अच्छा है एंड ही थिंक्स लॉजिकली, और ये चीजें जो मैंने बोली हैं जो डिसएडवांटेजेस, उनको ना फॉलो करके, इफ ही फॉलोज व्हाट इज हाउ एवरीथिंग इज टोल्ड देयर, then I think he will be able to do better. So we can sum up with the things that coaching is not bad. ऐसा नहीं कहेंगे कि कोचिंग ज्वाइन करना बुरा नहीं है, but you should join the right coaching where you are getting the right guidance. Along with that, you will get a like-minded audience or like-minded people that are all equally important. They will help you to practice more, and then you also have to maintain your individuality and learn the OLQs. Absolutely, and point to add in this is कि join those coaching centers where the duration of SSB coaching is longer. Because if you have coaching longer, then you can develop your personality. Because coaching centers are giving you microwave solution. अंदर डाला, सब्जी तैयार होके आ गई। हाँ। ठीक है, लेकिन वो कोचिंग सेंटर जो ज्यादा दिन कोचिंग देते हैं, वो उसकी तरह जिस तरीके से पुराने जमाने चूल्हे के ऊपर जो है बनती थी धीरे धीरे करके, वो जो खाना और जो माइक्रोवेव का खाना, उसमें जमीन आसमान। तो इफ यू वांट टू क्रैक योर एसएसबी, you must go for chula option and don't go for microwave solution. Yes, sir. This is nice.